Namaskar. The question is, are we moving towards autocracy from our great democracy? Because whatever the provisions of our democratic fabric, the constitutional fabric, they are being trampled upon. And it is a matter of great regret that we've been slowly losing our democracy in the form of disregard to the opposition, disregard to the demands of the people of the country, disregard to the constitutional provisions. You see, first, the bills are being passed without being discussed. They are being passed in dins. And very minimum time is being given for discussion or dissent. Within 8 days in Rajya Sabha and 6 days in Lok Sabha, 25 bills have been passed with 10 minutes or less time. 21 together. And 21 minutes together. Minutes we have done this, and there is absolutely disregard to the people, the honorable members, when we are asking for time for. There is an instance when an honorable member in Lok Sabha stood up in the seat, maintaining on protocol, and asked for division. Asking for division is a democratic right. It was not granted, the house was adjourned just day before yesterday. So this kind of autocratic behavior we've never seen in the nation. Not only this government is slowly moving towards ordinances. And we have seen that, in the first 30 years, there were only one ordinance to 10 bills after independence. In the next 30 years, there were 2 ordinances for 10 bills. But from the 16th Lok Sabha onwards, the average has been 3.5 ordinances or more. This time there has been 3.7 ordinances, and it appears that the House, when in session, has the main function of giving veto on those ordinances, just pass them as bills. Then why call the session at all? Why have the parliament in session at all? Why have the democratic norm at all? So much so that whenever the honorable members stand up, they are not allowed to speak. This kind of undemocratic behavior we have never seen. In India, we work on the lines of the Westminster Abbey, because there the opposition has 20% of the 100 days that they work, 110 days that they work. Here in the Business Advisory Committee, it is like the Kirana store where, the opposition says we will have 4 hours of discussion. Government side, the treasury bench says no, it is 2 hours. So you go on haggling for time, haggling for picking up issues and discussing issues which are people-centric. We had completely agreed with the government in the all-party meeting when we said that we would cooperate completely, go in for discussions. There are important issues to be discussed, including the farmers' bills, which are anti-farmer. We wanted to discuss the price rise. We wanted to discuss the serious issue of the COVID-19, which was totally mismanaged by this government. We've lost official number of people, 4 lakhs. Unofficially, though there is a report by Dr. Arvind Subramaniam that we've lost nearly 35 lakhs of people to this disease. And there is no discussion, though Rajya Sabha managed to discuss it. There was no discussion. Even calling attention was put by members. Even I had put, but it was not admitted. And the most important is the Pegasus issue. Who vetted it? Did the government do it? When the Israeli government is allowing
when the French government is allowing, when the international community are worried about who started this, whether it is started by the government or not. If it is not started by the government, then who did it? Who's spying on us? Who's spying on the people of the country? And it is so unhealthy, it is so dangerous because it's a military spyware. So who's unleashing this military spyware, the cyber war on the people of India? Hasn't the country got the right to know? Isn't the elected members of Lok Sabha and the nominated honorable members of Rajya Sabha, they have the right to ask and be answered on the floor of the house, to be recorded for posterity? The country should know, the people should know, the world is asking the question. So at the moment, wherever we stand, the country is passing through great danger, and we feel that we are slowly losing on our constitutional democratic fabric, and we are here to discuss the issues. We want to completely comply with the norms and come to conclusion regarding various bills which are people-centric, which have interest of the people in mind. But this government is not allowing it. They are bulldozing it. This kind of bulldozing behavior cannot be accepted. The Lok Sabha does not have a speaker even after 782 days. This is the highest number of days that we've had since we had a deputy speaker. The highest number previous to this was 270 days in the 12th Lok Sabha, but now it has crossed 782 days. There is no deputy speaker in the Lok Sabha. Not a single question has been answered in the Rajya Sabha by the PMO, and when the honourable members have demanded the presence of Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to lay down their answers or come and answer and have some discussions, the members' requests have not been heeded. So we would like to point out that the country is passing through great danger. This government appears to be dangerous for the people of the nation. So friends, now the Prime Minister is on record saying that due to disruption by the opposition, the House is not functioning properly. But how and when this disruption started? It is not that the first time Indian Parliament is watching or witnessing such disruption. It is from the middle of the 1950s when the disruption started. Why? In every parliament, whenever the opposition does not get space to ventilate their grievances on behalf of the people of the country, then naturally some disruptions take place. As rightly pointed out by my colleague, Dr. Kakuli Ghosdostilal, in UK, in Canada, 110 days session is being held every year. Out of that, 20 days are left to the opposition parties to determine what business would be done by the opposition, what subject would be discussed. That would be the choice of the opposition. So far the UK and Canada is concerned. And since we are following the Westminster pattern of democracy, why this cannot be followed in India? Now, after this, so far the adjournment motions in the Lok Sabha is concerned, and the 267 notice, that is the suspension of all other business to discuss a matter of public importance or public interest is concerned in Rajya Sabha. Both Lok Sabha and Rajya Sabha, we are giving notices. Different political parties in the opposition, they are giving notices from day one till today, but not on a single occasion, neither this adjournment motion in Lok Sabha nor this 267 notice in Rajya Sabha was allowed. Our question is why? Because it was happened during Narendra Modi's time initially. Before that,
also during UPA 1, UPA 2, long before that. So what happened in between? For the past 4.5 years, not a single 267 notice has been allowed in the Rajya Sabha. Let there be a proper reply from the government. Now, what are the issues? The burning issues to the oppositions are, one, the price rise, for which the entire nation is now totally disturbed. The nation's life has been disrupted due to skyrocketing prices of essential commodities, the petrol prices, etc., etc. Second is the COVID. As rightly pointed out, it was discussed in Rajya Sabha for some time, but Lok Sabha could not. Third is the Pegasus. And fourth is the Kishan. Now Pegasus, of late, there is a lot of information about government surveillance of public figures using a military spyware Pegasus. This software is made by an Israeli company, NSO, currently being raided and investigated by the Israeli government. And NSO claims the software only meant to survey terrorist militants, sold only to vetted governments around the world, costs a few crores of rupees for this spyware. NSO has no access or knowledge of which government used it to survey whom and when. So there is mystery all around. Now who can investigate into this? Not a political party, not a state government, because it is spread all over the world. It has international ramifications. Therefore, our party, All India Trinamool Congress, and some other political parties in the opposition, they are consistently demanding that there should be a high-level inquiry under the monitoring of the Supreme Court. Now, the government is running away from that discussion, not to speak of any ordering any inquiry. Government is running from that discussion. Why? Why Mr. Amit Shah and the Honorable Prime Minister, they are maintaining conspicuous silence over the issue? The gentleman who speaks every day, tweets every day, speaks every Sunday, this gentleman is conspicuously silent. Now my questions, or our questions rather, to the government is that have any government department or agency purchased Pegasus? Yes or no? Has any government department, Government of India department or agency ever used Pegasus to survey any Indian citizen? Yes or no? EPS, who were surveyed? Who were surveyed? Names of the persons we want to know. EPS, who authorized the action? Name of the officer who authorized such use of spyware against dozens of journalists, against constitutional functionaries, against political leaders, including our National General Secretary Abhishek Bandyopadhyay, high-level officials of the RAW, even PMO, Army, and who not? Media. Media, already I have told about media. So, if authorized by the government or any agency under the existing rules of such surveillance, yes or no? Whether the existing norms or rules have been followed in such cases, yes or no? Because we have come to understand, we are not experts, but we have come to understand that a robust market currently exists for hacking tools that can break into phones. Such companies like Zerodium and CrowdFence publicly offer millions of dollars for zero-click exploits. There was nothing that any of the targets reported seeing on their screen, so that one was both completely invisible as well as not requiring any user interaction. Its IT staff receives up to 40 targeted phishing attacks a year. Now, between May 2020 and June 21, Barracuda researchers analyzed more than 12 million spear phishing and social engineering attacks impacting more than 3 million mailboxes at over 17,000 organizations. So this is the situation around the world, including India.
So we are living in a state, not only a police state, now it is a surveillance state. We are living under a surveillance state. Nobody is safe. Although the Honorable Supreme Court, in its landmark judgment, has ruled that right to privacy is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, but this government, by keeping mum over the issue, has denied the right of the people, which is guaranteed by the Constitution under Article 21, and this government has not shown even any uncanny respect for the Supreme Court judgment. So it is unconstitutional, it is against the spirit of the Constitution, and it also does not pay heed to any Supreme Court order. Now the second point is the disruption. The disruption, all the time it is being said. Then I have some 1, 2, 3 points about disruption, and the gentlemen or the ladies or the stalwarts of BJP, what did they say on 2, 3 lines? January 30, 211, because in the previous year, December 2010, the entire winter session was washed out. Not a single business was transacted. This way, the way the bills are being passed in 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 4 minutes, in the Dean, it never happened. It is unprecedented in the history of Indian Parliament that dozens of bills have been passed in the Dean without any discussion, without putting the bills on board. Now, December 2010, BJP was in the opposition. The entire winter session was washed out. Not a single business was transacted, not to speak of passing bill in Dean. And what was the reaction when the journalist asked the stalwarts of BJP? The leader of the opposition in Rajya Sabha, Mr. Arun Jaitley, at that point of time, as he was quoted as saying in Ranchi, publicly he said, Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignore issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in the favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic, unquote. This is Mr. Arun Jaitley, 30th January, Shahid Divas, Martyrs Day 2011 at Ranchi. Then, August 26, 2012, Jaitley, outside Parliament, he publicly said, there are occasions when an obstruction in Parliament brings greater benefits to the country. Our strategy, our means BJP's strategy, does not permit us to allow the government to use Parliament for debate without being held accountable. We do not want to give the government an escape route through debate. So, in other words, we want disruption. September 7, 2012, about the frequent disruption and the washed out monsoon session of Parliament. Monsoon session of Parliament was washed out due to FDI in multi-brand retail. Then leader of the opposition of Lok Sabha, late Sushma Swaraj, had said, not allowing Parliament to function is also a form of democracy like any other form. She was reacting to Prime Minister Manmohan Singh's statement. The same day, that is on September 7, 2012, Mr. Jaitley too defended the disrupted session, saying, quote, one session of Parliament has earlier been lost on account of corruption in allotment of 2G spectrum that helped this country cleanse the telecom sector. Hopefully, the long-term gains of this session may enable future governments to clean up the process of allocation of natural resources, unquote. Therefore, the conclusion that has been drawn by the BJP leaders, we are not following their footsteps, but we want to say this is not unprecedented. The way the natural resources of the country is being sold out day in and day out by the Narendra Modi government, people's property, private sector organization, insurance, bank, airport, port, railway station, train, everything they are selling out.
Nothing will remain for our future generation. So, what is the alternative to the opposition? If the discussion is not allowed, what is the alternative of the opposition? So, there are so many points to make, what they did. So, now, as Dr. Kakuli Gossidhar has already said, now, when we are obstructing, we are opposing, we are protesting, on the third day or the fourth day, one of our member in the Rajya Sabha, Dr. Shantanu Sen, was suspended for the remaining period of the session without giving him an opportunity of being heard, which is denial to the principles of natural justice. Thereafter, 2 days back, 3 days back, 6 of our members in the Rajya Sabha, they were suspended all on a sudden, and for remaining period of the day's meeting as under Rule 255. What happened thereafter, when the House was adjourned for the next day, they were coming back to their seats to collect their belongings. They were physically prevented from entering the House, although the order of suspension for remaining period of the day was over. At the intervention of our leader of the Rajya Sabha, Mr. Derek O'Brien, the Secretary General then sent a message to the security guards, and thereafter they were allowed. Now a flimsy ground is being chalked out, cooked up, all this and that. Therefore, if this government does not have any sense, democratic sense, to know how to run the House, it is a duty of the chair, both in Lok Sabha and Rajya Sabha. Ample powers have been given to chair, both the houses, as to how they will run the show. It is for the chair to do it. We cannot suggest anything. But it is unfortunate that in spite of the unfettered power given to both the houses to the presiding officers, this is not being done. It is very unfortunate. And for the past 4.5 years, no T267 notice has been allowed in Rajya Sabha. Similar is the position in the Lok Sabha. Thank you. আমি কি যাবো বাংলাতে? আমি 1 সেকেন্ড বলে চলে যাবো। 1 সেকেন্ড আপনি হিন্দি বলবেন? আমি বলছি আপনি হিন্দি আর পরে বলে আপনি বাংলায় বলবেন। আচ্ছা, ডক্টর কাকলি গসিদার বাংলায় বলছেন। ভারতবর্ষে গণতন্ত্র একটা বিপন্নতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু যাচ্ছে বলে আমরা মনে করি, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করে এই কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিচ্ছেন সেগুলো আমাদের জন্য, ভারতবাসীর জন্য, আমাদের দেশের জন্য খুব বিপজ্জনক। এবং সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে যে যখন আমরা যারা বিপক্ষে আছি তারা আমাদের যখন সভা হয়েছে তখন আলোচনার মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন যে ইস্যুগুলো রাজনৈতিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দেশের স্বার্থে তুলে ধরার অঙ্গীকার করেছিলাম, তার মধ্যে যেমন আছে কৃষি বিল, তার মধ্যে যেমন আছে করোনার মিসম্যানেজমেন্ট, ভারত সরকার করোনাকে ঠিকমতো ট্যাকেল করতে পারেনি, তার মধ্যে যেমন আছে পেগাসাস ইস্যু, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যে ভারতবাসীর উপরে গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে কিনা, ইসরায়েলের এনএসও সংস্থাকে দায়িত্ব কে দিল, বরাত কে দিল, যদিও বিদেশি এই সংস্থার যে দেশ ইসরায়েল এবং ফ্রান্স এরা কিন্তু ইতিমধ্যে এটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষে কিন্তু আমরা প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লোকসভা বা রাজ্যসভা এটা নিয়ে কোনো আলোচনা করতে, উত্তর দিতে বা কোনো রকম অংশগ্রহণ করতে কিন্তু আমরা দেখিনি। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দেখবেন আপনারা যে এখানে এখন আর কোনো আলোচনা হয় না, যে বিলগুলো পাশ হয় সেগুলো মুহূর্তে মুহূর্তে পাশ হয়ে যাচ্ছে আলোচনা ছাড়াই। অধিকার আছে নির্বাচিত সদস্যদের প্রশ্ন তোলার, আলোচনা করার এবং ডিভিশন চাওয়ার, অর্থাৎ মেজরিটির মতামতের জন্য, কিন্তু কোনো
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে না মেনে সম্পূর্ণভাবে অনৈতিকভাবে গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে এই সরকার দেশটাকে চালাবার চেষ্টা করছেন। দেশের মানুষ কিন্তু বিপন্ন। ভারতবর্ষ সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে আজকে গণতন্ত্র বিপন্ন। যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে না না আমি হিন্দিতে বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি চলে যাবো। আজ না না আপনি যেতে চান যেতে হ্যাঁ পারেন, কোনো অসুবিধা আমি নেই। ফ্লাইট পাবো ঠিক না। ঠিক আছে। আমি আসি। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। प्लेन तो तक विमान नहीं। अच्छा हिंदी में बोलना चाहिए क्या? जैसे कि हमारे पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से बताया गया, डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने अभी अभी बताई कि लोकसभा और राज्यसभा में अब तक 25 बिल पास किया गया और इसमें डिस्कशन जो हुआ वो सरकारी पक्ष डिस्कस किया, वो भी 10 मिनट डिस्कशन हुआ। राज्यसभा में 12 बिल पास हुआ 8 दिन में और एक एक बिल पास करने में एवरेज डिस्कशन हुआ 13 मिनट। लोकसभा में 13 बिल पास हुआ 6 दिन में, एवरेज डिस्कशन पर बिल हुआ 8 मिनट। कितने सारे बिल स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी का निगरानी में आया, इसमें पता चलता है कि 14 लोकसभा में 60% बिल इंट्रोड्यूस हुआ था और पार्लियामेंट्री कमेटी का पास गया था। 15th लोकसभा में 71% बिल वे रेफर्ड टू पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था। 16th लोकसभा में 2014 से 19 इस समय, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार की पहला 5वां साल था, वो 25% बिल सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में भेजा गया था। अभी जो 17th लोकसभा चल रही है, दिसंबर 2020 तक ओनली 11% बिल स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया। पहला 30 साल में, हमारे संसदीय इतिहास की पहला 30 साल में 10 बिल में पर 10 बिल एक ऑर्डिनेंस हुआ करती थी। उसके बाद नेक्स्ट 30 इयर्स में, 30 साल में, फॉर एवरी 10 बिल्स 2 ऑर्डिनेंसेस। 16th लोकसभा, दैट इज 2014 to 2019, 10 बिल में 3.5 ऑर्डिनेंस। 17 लोकसभा से आज तक 10 बिल में 3.7 ऑर्डिनेंसेस फॉर एवरी 10 बिल्स। और अभी बढ़ते बढ़ते ये ऐसा जगह पे पहुंच गया कि हमारा काम हो गया संसद में कि वो जो बीच में संसद का सत्र नहीं होती है उस समय ऑर्डिनेंस जारी होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो उसके बाद हमारा पहला काम है, यही ऑर्डिनेंस है, ये तो लैप्स कर जाएगा, इसको आप पास करवा दीजिए। तो बीएससी कमेटी में यही मुद्दा ज़्यादा होता है, वो बिल पास हुआ जो ऑर्डिनेंस है उसको बिल बना के उसको पास करने के लिए ज़्यादा समय यहाँ दिया जाता है। और लोकसभा का प्रॉब्लम डॉक्टर घोष दस्तीदार ने बताया कि अभी तक डिप्टी चेयरमैन उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, डिप्टी स्पीकर अभी तक उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, काफ़ी दिन से एक पेंडिंग है। जबकि पिछले समय में 8 दिन का अंदर 71 डेज के अंदर किया गया था। अभी 782 दिन बीत चुकी है, लेकिन फिर भी डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में नहीं बना। राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी वो एक बार कभी साल में आते हैं, कभी नहीं आता है। जैसे इस बार आए थे अपने मंत्रिमंडल को परिचय करवाने के लिए, कर नहीं पाए, दूसरी बात है, लेकिन वो एक दफ़ा आए थे, बाकी समय वो नहीं आते हैं और जवाब देने का कोई सवाल ही नहीं आते। पीएमओ, ज़रूरी नहीं है कि पीएम सवाल के जवाब देंगे, लेकिन पीएमओ जो है मंत्री, वो भी जवाब नहीं देते हैं। 2017 में एक पीएमओ का एक भी जवाब नहीं आया।
2009 से 2014 जब मनमोहन सिंह जी पीएम था, उस समय 21 क्वेश्चन का जवाब दिया गया था, और नरेंद्र मोदी जी का फिर जो 17 और 21 का जो ये समय है, कार्यकाल है, इस कार्यकाल में एक सवाल का भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया राज्यसभा में। तो इस तरह जो पहला दिन संसद आते हुए वो सीढ़ी पर सर झुका के बोला था ये लोकतंत्र की मंदिर है, इस मंदिर का प्रति उनका कितना श्रद्धा है, इस थोड़ा बहुत हमने आपके सामने कुछ फिगर्स रखा। अभी बताया गया कि हमारा मुद्दा क्या है। हमारा मुद्दा 4 है। एक है किसान का मुद्दा, एक कोविड का मुद्दा, एक प्राइस राइज का मुद्दा, और बाद में आया पेगासस का मुद्दा, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी है, ये नेशनल सिक्योरिटी के सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में सारे विरोधी 2-1 छोड़ के, जो कि सरकार के साथ है, ये 2-1 छोड़ के बाकी लोग हर दिन नोटिस दे रहे हैं कि सबसे पहले पेगासस चर्चा शुरू किया जाए, क्योंकि जो कुछ निकले हैं अखबारों में आपको मालूम है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो ये गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होना चाहिए। इस विषय पर थोड़ा अटकलें पैदा हो गया, और सरकार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि विरोधी लोग ये इस हंगामा कर रहे हैं, इसलिए काम ठीक से नहीं हो रहा है, देश देख रहा है, ये सब बोल रहे हैं। तो मैंने कुछ सुना है आप लोगों को अभी कि 2010 की विंटर सेशन पूरा बर्बाद हो गया था, एक दिन भी कोई काम नहीं हुआ था, जबकि विरोधी दल थे बीजेपी और विरोधी नेता थे अरुण जेटली जी, और उन्होंने बोला, उनको जब पत्रकार लोग पूछा था, उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, क्योंकि सरकार अगर डिबेट का रूट में भागना चाहते हैं, हम डिबेट के रूप में उनको भागने नहीं देंगे, हम हंगामा करके बंद करेंगे, और ये हंगामा भी हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली जो है, इस लोकतांत्रिक प्रणाली का अंग बनती है, ऐसा दावा उन्होंने किया। और लोकसभा का लीडर जो सुषमा स्वराज जी थी, वो भी ऐसे ही दावा किया। तो पेगासस के बारे में हम लोग क्यों चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। किसने खरीदा, किसके ऑर्डर पर खरीदा, कहाँ से खरीदा, कब से खरीदा, कितने आदमी को इस सर्विलेंस के स्कैनर में लाया गया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जानने का अधिकार हर आदमी का है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया, और बोला कि राइट टू प्राइवेसी हमारा आर्टिकल 21 जो है संविधान की, धारा 21 की अंग बनती है राइट टू प्राइवेसी। सो भारत की कोई भी नागरिक का अगर कोई भी इंफॉर्मेशन उनका फ़ोन से किसी ने भी उसको गायब करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं, तो खुफिया एजेंसी के द्वारा हो चाहे दूसरी कोई व्यवस्था के द्वारा हो, तो उनको जानने का अधिकार है, क्यों किया गया और कैसे किया गया, नियम के मुताबिक किया गया कि नहीं किया गया, यही सवाल हम लोग जानना चाहते हैं। तो सरकार इस चर्चा से भागते हैं क्यों? आज क्यों प्रधानमंत्री जी नीरव है? नीरव मोदी तो भाग गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी नीरव है, और गृहमंत्री जी भी नीरव है, एक शब्द भी अभी तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोल रहे हैं? जबकि हर टीवी चैनल में चर्चा हो रहा है, सब अखबारों में इसके बारे में खबर निकलती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में PIL सुनने के लिए तैयार है, तब पार्लियामेंट में नहीं सुना जाए, चर्चा होगा। पार्लियामेंट तो लोकतंत्र की सर्वोच्च पीठ है, सबसे बड़ा पीठ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था ये लोकतंत्र की मंदिर है। तो मंदिर में घंटा नहीं बजेगी तो कहाँ बजेगी? सड़क पर या कॉफ़ी हाउस में, टी स्टॉल में? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं, सरकार जवाब दें। और जो हम कहते हैं कि दिन में जैसे बिल पास किया गया, हमने बताया, डॉक्टर काकोली घोष जी भी बताया, 2 डजन से ज़्यादा बिल दिन में पास किया गया। ये कभी भी हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में नहीं घटी, जो कि इन लोगों ने किया है। और अगर ये चलती रहती है तो लोकतंत्र विनाश हो जाएगा, संसद का गरिमा जो है वो भूलुंठित होगा, इसका धूमिल हो जाएगी। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये ज़बरदस्ती का रास्ता छोड़ के लोकतांत्रिक जो प्रथा है, नियम है, उस लोकतांत्रिक नियम के अनुसार आप चर्चा करो, सब विषय चर्चा करो। जैसे कि UK और कनाडा में 110 दिन पार्लियामेंट चलती है,
उसमें 20 दिन दिया जाता है विरोधियों को कि विरोधियों लोग तय करेगा किस विषय पर चर्चा होगा नहीं होगा। ऐसा मोहलत विरोधी लोगों को दिया जाए, ये हमारे मांग है। और जब तक ये मांग हमारा पूरी नहीं होगा, जब तक पेगासस चर्चा नहीं होगा, हमारा ये जो विरोध है ये विरोध चलते रहेगा। अफसोस की बात है कि बहुत सारे पार्टी ने विरोध किया, लेकिन चुन चुन के हमारे एक सांसद डॉक्टर शांतनु सेन को सारे अधिवेशन की सत्र की समय तक उनको निलंबित किया गया। ये हम खेद जताते हैं, हम इसको विरोध करते हैं। 3 दिन पहले हमारे 6 दूसरे सदस्यों को इंक्लूडिंग लेडी मेंबर्स दे वर ऑल्सो सस्पेंडेड, उनको भी सस्पेंड किया गया 1 दिन के लिए। और जब सस्पेंशन के बाद जब उन्होंने अपनी जगह पे जा रहे थे उनको बैग उठाने के लिए, तब मेल सिक्योरिटी गार्ड्स उनको फिजिकली इनको बाधा डाला, उनको जाने नहीं दिया। फिर डेरेक ओब्रायन हमारे जो नेता है राज्यसभा का, उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से बात किया, उन्होंने इंटरवेन किया, उसके बाद फिर उन लोगों को जाने दिया। ऐसा माहौल पैदा हो गया, डर का महल, आतंक की महल आज संसद के अंदर चला आया। आज राज्यसभा की काउंसिल का अंदर भी एक आतंक की माहौल पैदा किया गया सरकार की ओर से। हम इसको कड़ी से कड़ी भाषा से निंदा करते हैं। और जब तक हमारे ये मांगे पूरी नहीं होगा, हमारा विरोध जारी रहेगा, संसद के अंदर भी संसद की बाहर भी। जैसे हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने बोला कि पेगासस के ऊपर सरकार को जवाब देने पड़ेगी, और हम भी चाहते हैं और सारा हिंदुस्तान चाहते हैं कि इसको जवाब सरकार को देने पड़ेगी। हाँ, এর চেয়ে হাস্যকর যুক্তি আর কিছু হতে পারে না। কারণ 2 সদনেই বহু বিচারাধীন বিষয় বহুবার আলোচিত হয়েছে। আর সুপ্রিম কোর্টের বিচারাধীন বা হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয় যদি টিভি চ্যানেলে আলোচিত হতে পারে, খবরের কাগজে আলোচিত হতে পারে, তাহলে লোকসভা বা রাজ্যসভাতে আলোচনা হবে না, সংসদেও আলোচনা হবে না। এটা সংসদীয় মন্ত্রী বলছেন শুনে ওই যে মরাগুলো কবরে শুয়ে আছে তারাও নড়ে উঠবে। কারণ হচ্ছে যে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে পার্লামেন্টের যে সুপ্রিমেসি, পার্লামেন্টের যে সভারেন্টি, এটা যারা জানে না, বোঝে না, তারা কি করে সংসদীয় মন্ত্রী হন আমি বুঝি না। না, কোনো আলাদা না, আমাদের ডিসিশনটা অনেক আগেই হয়েছিল। আমাদের ডিসিশন হয়েছিল, সেই ডিসিশন অনুযায়ী আমাদের সকালবেলা আজকে 3 জন প্রতিনিধি চলে গেছেন, দোলা সেন, অপরূপা পোদ্দার এবং প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এরা 3 জন আজকে সকাল 9টা সাড়ে 9টার সময় চলে গেছেন আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী। তারপর সকাল 10টায় কংগ্রেসের ঘুম ভেঙেছে এবং মিটিং ডেকেছে। তারপর তারা ঠিক করেছে সবাই মিলে যাবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, যাওয়া তো হয়েছে। যদি একসঙ্গে ডিসিশনগুলো নেওয়া হতো তাহলে এই দূরত্বগুলো হতো না। আমরা চাই যে কোনো দূরত্ব নেই, কোনো মনোমালিন্য নেই, আমরা এক আছি, আগামী দিনেও আমরা এক থাকবো। আজকে সকালে বুধদা যখন খার্গের বাড়ি ঘরে মিটিংটা হলো, সেখানে আপনাদের কোনো পার্লামেন্টারি পার্টি লিডার গেল না। কে বলেছে? লিডার যায়নি, আমাদের প্রতিনিধি ছিল। চিফ হুইপ বা না, তার কোনো এটা কোনো জরুরি নয় যে সব মিটিংয়ে লিডারকেই থাকতে হবে। আমাদের প্রতিনিধি ছিল কিনা সেটা বিচার্য বিষয়। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একজন সাংসদ রাজ্যসভার নাদিমুল হক এবং লোকসভার সাজদা আহমেদ, তারা দুজনেই, সাজদা আহমেদ 2বারের এমপি এবং নাদিমুল হকও 2বারের এমপি। সুতরাং তাদেরকে খাটো করে দেখার কোনো দরকার নেই। তাছাড়া এটা একটা দল ঠিক করে যে কারা যাবে কারা যাবে না। সরকার মানুক না মানুক, সারা পৃথিবী মেনে নিয়েছে। কারণ ফরাসি প্রেসিডেন্ট তিনি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং ফরাসি ইনভেস্টিগেটিং টিম ইসরায়েল ঘুরে এসে ফ্রান্সের সরকারকে যে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলেছে যে এর মধ্যে যথেষ্ট উপাদান আছে সন্দেহের যে সত্যি সত্যি এই পেগাসাসের মাধ্যমে সার্ভেলিয়েন্স করা হয়েছিল। এটা প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট ফ্রেঞ্চ ইনভেস্টিগেটিং টিম বলেছে। ইসরায়েল গভর্নমেন্ট ওই এনএসও যারা এটার সাপ্লাই দেয়, বিভিন্ন জায়গায় এক্সপোর্ট করে, তাদের অফিসে এবং অন্যান্য জায়গায়
তারা রেড করেছে এবং সমস্ত তথ্য তারা জোগাড় করছে যে সত্যি হয়েছিল কিনা, কী হয়েছিল, কাকে দিয়েছিল। ওরা যে বলেছে শুধু সরকারি সংস্থাকেই দেওয়া হয়, তো শুধু সরকারি সংস্থাকেই দেওয়া হয়েছিল কিনা এটা। তৃতীয়ত হচ্ছে যে মৌনতা হচ্ছে স্বীকৃতির লক্ষণ, মৌনতা স্বীকৃতির লক্ষণ। কেন নরেন্দ্র মোদী, কেন অমিত শাহ বা কোনো উচ্চ পদাধিকারী ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এখনও পর্যন্ত বললেন না যে না ভারতবর্ষ এরকম কোনো মিলিটারি স্পাইওয়্যার কেনেননি পেগাসাস নামে? তারা চুপ করে আছেন। তো মৌনতা সম্মতির লক্ষণ, অর্থাৎ ওনারা জানেন, ওরা করেছেন এই পাপ কাজটা ধরা পড়ে গেছে, তাই ওরা এখন সমস্ত আলোচনা থেকে পালাতে চাইছেন। এখন সুপ্রিম কোর্টে ওজোর দেখিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ সারা ভারতবর্ষ জেনে গেছেন যে এরা চৌর্যবৃত্তি করেছে, এরা চরবৃত্তি করেছে। Today there was a BSc meeting. Did you walk out of the Yes, today I walked out from the BSc meeting after telling the chair that in the last BSc meeting, time was allotted for several bills. Normally what happens, time allotted for several bills, and gradually those bills comes in the list of business. But what happened in respect of two bills, particularly defense services bill and the insurance bills, it was the concerted appeal from the opposition to the chair and the government that these two bills should be sent to the select committee. At that time, the chair was kind enough to assure us that when these two bills will be taken up in the House, the motion can be moved. We wanted to move the motion when the defense services bill was taken up yesterday. It was not allowed. So, it is a fraud on the part of the government. That is why I said all these things today in Business Advisory Committee meeting, and I said it is meaningless to attend this committee meeting because something will happen tomorrow or the day after as per the wishes and choice of the government. Opposition has no role to play. This way, they are demolishing the parliamentary structure of this country. শুভেন্দুদা, কালকে সুপ্রিম কোর্টে হিয়ারিং এর আগে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছিলেন যে এর মধ্যে কোনো সারবত্তা নেই, শুধুমাত্র মিডিয়ার। রবিশঙ্কর প্রসাদ কে? এখন তো উনি মন্ত্রী নেই। মন্ত্রী আছেন কি? এখন মন্ত্রী উনি আগে ছিলেন, ওনার বোধহয় এখনও এটা হ্যাংওভারটা কাটেনি। এবং 2019-20 সালে তখন কিন্তু আচ্ছা, আমি এইসব নিয়ে কোনো বিতর্কে যেতে চাই, আমি বললাম তো, উত্তর দিলাম তো। এবার আর কারো কোনো প্রশ্ন? এনিবডি প্লিজ, किसी का कोई सवाल हो तो बोलिए। हाँ, রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পুরস্কারের নাম বলতে গেলে সরকার বদলে দিয়েছে, আনসার পুরস্কার নাম দেওয়া হয়েছে, কি বলবেন? প্রথমত এটা অন্যায়, এই কারণে অন্যায়, রাজীব গান্ধী দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, তিনি একজন শহীদ। কোনো শহীদের নাম মুছে দিয়ে আরেকজন বিশিষ্ট লোকের নাম নেওয়াটা, এটা হচ্ছে এর মধ্যে একটা নোংরা রাজনীতি রয়েছে। এই নোংরা রাজনীতিটা না করাই উচিত ছিল। 2 নম্বর, ধ্যানচাঁদ, তাকে হকির জাদুকর বলা হয়, সারা দেশ তাকে শ্রদ্ধা করে। মোদি যে নিজের নামে স্টেডিয়ামটা করেছেন, ওই স্টেডিয়ামটা যদি নিজের নামটা সরিয়ে দিয়ে ধ্যানচাঁদের নামটা দিতেন তাহলে বোধহয় অনেক ভালো হতো এবং আমরা সারা দেশ তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকতাম। এনি মোর? Sir, would the TMC consider any option of moving the court with regards to the violation of constitutional provisions when it comes to the passage of bills without debate? That we'll discuss in the meeting of the opposition parties in due course, and if any such decision is taken, so naturally that step will be taken, provided there is a unanimity on this point. Shikendra, just that question, could you repeat that in English about the changing of the Khel Ratna award name to Dhyanchand Khel Ratna? What to do? Could you just ধ্যানচাঁদ হ্যাঁ, কী করতে হবে? ইংলিশ ইংলিশে তো বল। ও আচ্ছা, না আচ্ছা। First of all, Rajiv Gandhi is a martyr. He laid down his life for the country, and it is a very dirty trick to change the name of a martyr with another distinguished person of sports. We equally regard Dhyanchand, who is called the wizard of hockey, of Indian hockey, and it would have been better if the stadium which has been named after Narendra Modi, that name should have been erased, and in that place Dhyanchand's name should have been replaced. That would have been better tribute to Dhyanchand. Any more? Thank you very much. শুভেন্দুদা, একটা লাস্ট প্রশ্ন আছে। আবারও প্রশ্ন? 5ই আগস্ট রাম মন্দিরের শিলান্যাস, 5ই দিয়ে এটাকে পুরো সবকটাকে একসঙ্গে করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রবল সমালোচনা হচ্ছে যে একই দিনে কাশ্মীরে 370, একই দিনে রাম মন্দির, একই দিনে হকিতে পদক। ওটা হচ্ছে কোইন্সিডেন্স নাকি কি বলে ক্রোনোলজি, যে অমিত শাহ বলেছে ক্রোনোলজি,
ওটা হচ্ছে অমিত শাহ যে ক্রোনোলজিগুলো বোঝাচ্ছিল, এটা এই ধরনের একটা ক্রোনোলজি।